इंडिया की एसोसिएट एडिटर रही हैं। वर्तमान समय भी आप लेखिका हैं। कई चीज़ें आप कर रही हैं, हम आपको सुनना चाहेंगे। आदरणीय बहन नारायणी गणेश जी, भरपूर तालियों से अभिनंदन करते हैं। Of the BrahmaKumaris organization, Chief Guest Shri Om Birla ji, Honorable Speaker Lok Sabha, and all the valued guests assembled here, both on the dais and in the audience, including Swami Dharamdev, Dr. Mohit Gupta. My special gratitude to B.K. Brijmohan Bhai Sahab, B.K. Asha Behan and B.K. Shivani Behan, with whom I have been interacting for long years in the course of editing the Times of India's Speaking Tree columns and newspaper. Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts with all of you on this very special occasion to promote positive change and to also celebrate International Yoga Day that is observed on June 21st every year. The theme being Year of Positive Change. If you ask me what positive change I wish to see in the near future, it is difficult to state just one. There are so many positive changes that need to happen, and many of them are interrelated. Some need to happen simultaneously. Yet I will try to focus on just one for the purpose of this short talk. But before that, let me share with you quickly at least 5 changes that need to happen to create an atmosphere of positivity in our lives. First, positive change has to come from within us, for unless the individual makes the effort to cultivate positivity within himself or herself, it is unrealistic to expect good results only by wanting to change others or the situation or the environment that are external to us. From individual change, we can expect collective change that can flood the world with positive thoughts, words and deeds. Secondly, we need to learn the art of anger management. For most negativities are the outcome of unbridled, uncontrolled anger that unleashes immense amount of energy, but that energy is used for all the wrong reasons and purposes. If we are unable to control the feeling of anger, then at least we can try to channelize the energy for good purposes that can bring about positive change. Thirdly, cultivating compassion and kindness is very basic to living life in a humane and positive manner. With compassion and kindness comes understanding and love, and naturally then peace follows. Fourthly, we need to value silence and reflection. We are assaulted by all kinds of information, verbal, in print, online, on our e-devices and social media. Never before has there been such a glut of information coming to us from all sides. So much so that a new word has been coined, infodemic. Yes, it is indeed very similar to pandemic, like any dreaded disease. The most recent one being the Corona COVID-19 pandemic that held the world to ransom for more than 3 years and is still lurking in some form or the other in several quarters. Infodemic is a combination of information and epidemic, coined by a columnist in the Washington Post, David Rothkopf, in the context of too much information and misinformation spawned during the SARS epidemic, creating panic all around, leading to bursts of negative attitudes and reactions. Fifthly, we need to learn to respond rather than react to people, situations and events. Reaction is impulsive, usually done without thinking,
and emotional, so it tends to create more problems than solutions. On the other hand, when you respond, it is after giving it some thought, and the result is bound to be more rational, intuitive rather than impulsive, and it will be more positive rather than negative. Having stated the 5 most important positive changes I think we need to implement, both as individuals and as a collective, as in a family, community, society, nation and world, I will now say a bit about the 4th change I talked of earlier, related to dealing with infodemics. Having been a media person for 34 years as part of the Times Group, and having been exposed to spiritual and philosophical wisdom via the columns that I had the opportunity to be editor of, The Speaking Tree and The Sacred Space, I feel the need to speak more about the positive changes I wish to see in the way we gather, distribute and interpret information, whether in the media or through any other source. Our interfaith spiritual traditions and rich treasury of interfaith spiritual wisdom have stressed that information and knowledge are 2 very different things, but we tend to think that they are one and the same. The positive change I wish to see is that more people and organizations, netas and institutions cultivate the viveka, the power of discernment, to become keenly aware of the difference between information and knowledge. Too much information can only clutter and confuse the mind. It creates panic and negativity. In the case of knowledge, some of it may of course come from information, but a large portion of it is acquired through experience, learnings from the wise, and by knowing how to separate the wheat from the chaff. It is said that the mythological swan, when presented with a mixture of water and milk, could drink from the mixture and imbibe only the milk and leave the water behind. How far this is true, I do not know, but it is a useful metaphor that can illustrate the need to cultivate the ability to discard what is required and retain only what is positive and useful. This cannot happen overnight. It requires sustained self-discipline and self-training that can only come from shutting out all the noise that surrounds us and spending some quiet time to think and reflect in silence. This is what meditation techniques like Raja Yoga, advocated by the BrahmaKumaris, for example, and other kinds of meditation taught by different spiritual schools can help us to achieve. Which is why I said earlier that many of the positive changes I wish to see are interrelated. A meditative mind will naturally stay calm, will not succumb to anger, will be kind and compassionate, will respond rather than react, will learn to distill knowledge from information, and most importantly, will strive to first bring positive change within, so that the positivity that one feels within can radiate outside and help transform the attitude and perspective of others and lead to a collective positive transformation from being negative to becoming full of hope and altruistic purpose, heralding a whole new world that is more loving, caring and compassionate, where the walls of divisions disintegrate to reveal a oneness of spirit and positive attitude and action, even if only one small step at a time. Learning to embrace silence and regularly spending some time on reflection are some of the ways by which we can get centered and stay
unperturbed in the face of the many challenges life presents. I often receive wisdom nuggets from my sisters and brothers, the BrahmaKumaris, on my phone. A recent message said, "The one who has a desire to move towards perfection is busy trying to add goodness and positivity to everything he or she does, and not just keep out negativity." Now that's the other thing. It is not enough if we ward off or avoid negativities. We need to actively action positive thoughts, words and deeds to add value to life and to make possible positive changes by making the effort to step out of our comfort zone. Affirmative action is the key, and it is important that positive change happens within the individual first, so that positivity can radiate outside and catch on towards enabling positive change on a macro scale. So I sincerely hope that this commendable theme proposed here, Year of Positive Change, acquires a life of its own and inspires every one of us to contribute towards making it a reality. It is said that the only constant thing in life is change. Nothing remains the same. Change is one of the natural laws of life. So let's make it our mission to ensure that the change we bring forth will make this world more beautiful and worthwhile, spreading happiness and joy, that it will create an abundance of good karma for us and for future generations. Om Shanti. Thank you once again, and a special thanks to the beautiful girls who gave us this charming dance, which really lifted my spirits. And very grateful for participating in this wonderful gathering. Thank you very much. Om Shanti. यदि नहीं, उस इंफॉर्मेशन को कट कर, और दूसरा स्वयं पर ध्यान दें, हम कैसा विश्व चाहते हैं। जैसे विश्व की परिकल्पना करते हैं, वैसा विश्व बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़े, ताकि वो विश्व सुंदर बन सके, हम सबके लिए सुंदर बन सके। आइए अब हम नेशनल लॉन्च के इंसिग्निया दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं, और मैं आदरणीय अपने देश के स्पीकर महोदय भ्राता ओम बिरला जी, मंच पर उपस्थित सभी वक्तावृंद, और साथ में मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ जो सामने हमारे मंच के सामने बैठे हैं। कृपया आप भी दीप प्रज्वलन को ज्वाइन करेंगे। मिसेस रेखा गुप्ता, काउंसलर शालीमार बाग, डॉक्टर संदीप मारवा, फाउंडर नोएडा फिल्म सिटी, श्रीमती कल्याणी राज, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, श्री अरुण सिंह, चेयरमैन एंड CEO ONGC, श्री रोशन तमाक, CEO DCM श्रीराम, श्री अनिल खेतान जी, CMD सुनील हेल्थ केयर, श्री रूबी राजवंशी, डायरेक्टर हज, डॉक्टर शशि भूषण तनेजा, साइंटिस्ट H, डायरेक्टर DRDO, राहुल जेटली जी, एक्टर बॉलीवुड, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, प्रोफेसर संजय, डायरेक्टर एमिटी यूनिवर्सिटी, श्री SN घोरमडे, वाइस एडमिरल इंडियन नेवी, श्री प्रदीप सागर, सीनियर एडिटर इंडिया टुडे, श्री मनोज सेठी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और हमारी जो ज्योत जगा, ज्योत जगा, विश्व शांति की
जग के वो माटी के खिलाफ वैर कभी ना रखना। अहिंसा के तू पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योति जगाओ। साथ ही साथ मैं निमंत्रण दे रही हूँ नेशनल लॉन्च सरोजबेन वसंत कुंज, और फ्लैग्स के लिए आमंत्रित कर रही हूँ विवेक भाई शालीमार, दुर्गेश भाई ORC, चौधरी भाई हरिनगर, योगेश भाई शक्तिनगर, श्यामपाल भाई सिरीफोर्ट, प्रशांत भाई करोलबाग। कृपया जल्दी आ जाएंगे, आ जाइए भाई भी आ जाए। जिन भाइयों के नाम अनाउंस किए हैं कृपया जल्दी से करें। शताब्दी वर्ष के अंदर इस सकारात्मक वर्ष जो हमारे जीवन में नया सकारात्मक संदेश लेकर आए, नई ऊर्जा लेकर आए, नया सामर्थ्य लेकर आए, और हम सब मिलकर भारत के प्राचीन राजयोग द्वारा स्वर्णिम युग की पुनः स्थापना कर सकें। मुझे खुशी है ब्रह्माकुमारीज संस्थान लगातार 8 दशकों से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण के लिए लगी हुई है। इस संस्थान ने व्यक्ति के जीवन के अंदर एक आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक चेतना, सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के अंदर आंतरिक ऊर्जा का एक प्रभाव पैदा किया। मुझे बहुत नजदीक से इन संस्थान की गतिविधियां, कार्यक्रम और किस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति निर्माण में संस्था केवल इस भारत में नहीं, पूरे विश्व के अधिकतम देशों के अंदर इस संस्थान ने एक सकारात्मक परिवर्तन
विश्व के अंदर मानव समाज ने किया है। और मुझे खुशी है कि राजयोग द्वारा इस परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव आज भारत में भी नजर आ रहे हैं, दुनिया में भी नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आज संस्थान ने तय किया है कि हम भारत के प्राचीनतम राजयोग, योग विज्ञान, आध्यात्मिक दिशा से एक सृष्टि के अंदर एक स्वर्णिम युग की शुरुआत करें। और इसीलिए व्यक्ति के जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगा, सकारात्मक चिंतन रहेगा, तो उसके जीवन में हर आने वाली चुनौतियों का वह सकारात्मक दृष्टि से उसका समाधान करने का कार्य करेगा। और इसीलिए जितना आप राजयोग, ध्यान योग, आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होंगे, नई ऊर्जा मिलेगी, कार्य करने में सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन में शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह मिलेगी। और इसीलिए अगर सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो हमें सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन, समाचार, विचारों को लेकर, और जिस तरीके से दादा लेखराज जी ने इसकी शुरुआत की थी और कहा था स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, और सारा विश्व का एक भगवान है। और आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं भारत इसी आध्यात्मिक चिंतन, सोच, विचार, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हम सब लोग आज गर्वान्वित हैं कि हमने हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारे योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वव्यापी पहचान बनाने के लिए सकारात्मक काम किया है और उसके सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में हुए हैं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग की भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हम किस तरीके से योग के माध्यम से मन शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए हमारे बीच में एक सकारात्मक वर्ष के अंदर इस संकल्प के साथ कि मानव जीवन के अंदर हम आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति, राजयोग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में शांति और शांति के माध्यम से नए मार्ग का प्रस्तुत करने का काम करें। हमारे बीच में शिवानी बहन भी बैठी है जो अपने विचारों से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लाखों लोगों के जीवन में रोशनी करने का काम है। लाखों ब्रह्मकुमार, लाखों ब्रह्मकुमारी दादियां जिन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है, आध्यात्म के लिए समर्पित कर दिया है, उनके इन्हीं प्रयासों के कारण आज इस संस्थान ने
चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, समाज के हर तबके, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दिशा दी है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं कि आपके इन प्रयासों से कारण आज विश्व के अंदर नई दिशा मिली है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।